Hello, hello. Good morning, ma'am. Very good morning. So yesterday we discussed Morning, ma'am. good morning, beta. Yesterday we discussed the last chapter. Why do we fall ill? And various types of disease we have discussed yesterday. I think there should not be problem regarding that. No, ma'am. Okay. Have you done to write all the concerned questions which is given at the back of the chapter? Try किया तुमने प्रैक्टिस करने का लिखने का? Yes, ma'am. Okay. So any time, any day, I will demand the copy and you will submit. And you keep on writing without asking. ठीक है? And number of long questions you take from the book and question also the question I had given you earlier. So you try to write it in a separate copy. Is that all clear? So now today I want to discuss regarding some cell division process. ठीक है? Because in animal cell you all have seen the very small structure that makes difference with the plant cell. So how it works, how it functions. Is that clear? So Yes. cell division, you write in your copy cell division. So in animal cell you might have seen this type of small structure. याद है ना? Just outside the nuclear membrane. What was the name of this structure? It was centrosome. Listen, mute yourself. No unnecessary sound should come. Tell your family members to stop talking. I have muted all, then you are talking. Concentrate what I am going to tell. Is that clear? So this is centrosome that makes difference with the plant cell. Plant cell में ये था structure. Was that structure present? No. No, ma'am. So centrosome, what is the purpose being present in the animal cell? ठीक है? So it is inactive all the way unless the cell is not ready to divide. ठीक है? When cell becomes ready to divide, prepare itself to go for further cell division, then this centrosome becomes active. Active का मतलब क्या हुआ? How it becomes active? जैसे ये centrosome है, ठीक है? It has two bodies. This is, what is the name? Centriole. Centriole. ठीक है? समझ में आया? और ये centriole, it is very much required when cell is dividing. तो ये करता क्या है? सबसे पहले एक centriole body it fix at the north pole, ठीक है? और दूसरा comes to the south pole, ठीक है? This is south pole. Or how it moves with the formation of spindle fiber. इसको कहते हैं astral rays. Am I clear?
एस्ट्रल रेस और स्पिंडल फाइबर दोनों एक ही नाम है, ठीक है. सो वन सेंट्रियोल बॉडी गेट फिक्स्ड at the North Pole and other likes to move to the South Pole. Is that all clear? इस extent तक clear है सबको? Yes, ma'am. Okay, Yes, very yes, nice. ma'am. Okay, very nice. अब listen, if the question is asked कि what is the purpose of astral rays or spindle fiber, क्या purpose है इसका? तो what you will say, अगर 1 mark का question है तो what you will write, its purpose to bind with the chromosome. इसका काम ही है क्रोमोसोम को बाइंड करना. और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबको पता है, ये 2 आर्म्स हैं, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं. और ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड होता है एक बॉडी से, राउंडेड शेप बॉडी, एंड दैट इज सेंट्रोमियर. These are the chromatids and this is centromere. One thing I want to tell you, chromosome has got the types. इसके भी type होते हैं. Just see the types. लिख लोगे? एक ऐसे होगा, सी. Just make it. These are the different types. यहाँ देख रहे हो, one arm that is short, one is long. Is that clear? तो ऐसे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर को कहते हैं सब मेटासेंट्रिक. ठीक है, दिस इज सब मेटासेंट्रिक. And this equal arms attached with the centromere, it is metacentric. Am I clear? It is metacentric. Now एक यहाँ पे देखो, ये the position of the chromosome is inverted and one arm is quite small in structure and it is directing upward, vertically present, and the next arm is quite long. इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक. यहाँ देखो, वेरी, ये only centromere present, one arm is missing, acentric. Is that clear? So if you want, you can write all that types. How the structure differs from one to another structural pattern. ठीक है? अब पूछोगे कि these are the different types you are seeing with small arm, equal arm, and it is verted, that is vertically placed, one arm quite short and without arm. Ma'am, can you please repeat the names? Yeah, this is submetacentric. Submetacentric. And this is equal arm metacentric. This is telocentric. T-E-L-O. And the last one is acentric. Is that clear? So these types. Ma'am, please. Last ones. Acentric. A for absence. A. Am I clear? Now you will Yes. ask why these all structures differs. Actually chromosome का structure and shape क्या होता है? ये metacentric type. But why ये जो difference है? Why this difference? तो difference is during the process of crossing over,
क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 जो कि रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और हमने नंबर ऑफ टाइम्स बताया भी होगा, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मीन्स क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। जैसे ये 46 है ना, तो मियोसिस 1 इट इज 23 एंड 23, ठीक है। तो ये हैप्लॉइडिक कंडीशन, ये डिप्लॉइडिक कंडीशन, ठीक है। बट दिस रिडक्शनल डिवीजन इन meiosis 2 it again become the same. Meiosis 2 है just like mitosis in which number of chromosome remains same. तो सेम आने के लिए क्या होगा, they will have to fuse. तो हम ये कह सकते हैं कि 23 और you can ask कि why this reductional division takes place in meiosis 1. What's the reason? अगर ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता तो देयर वाज नो एनी क्वेश्चन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स यू नो दैट इज सेक्स सेल. सो gamete cell is always haploidic. It is denoted by single n. n is the number of chromosome. बहुत ज्यादा बोल रहे हैं. Any confusion beta? No. So this small n, single n क्या होता है, n means number of chromosome. तो gametes में हमेशा haploidic condition maintain करता है, means chromosome number reduced to half. यहाँ reduced हुआ ना, हम लोगों में and chromosome number varies from species to species. In human being it is 46 और it in meiosis 1 reproductive cell में हमेशा meiosis होगा, chromosome number reduced to half. You are seeing here 23. It for what? For the purpose of gametes. इस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स. इज दैट क्लियर? तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, माय क्वेश्चन वाज व्हाई दिस स्ट्रक्चर डिफर्स फ्रॉम वन स्ट्रक्चरल पैटर्न टू अनदर. तो योर आंसर विल बी व्हाट? ओनली ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर number of sometimes the chromatids they get overlapped, and during that crossing over this happenings. Is that clear? So what you will say, during crossing over of meiosis 1 it this same happens. Is that clear? And जैसे देखो ये when you will go in higher class then you will read also. Yes, ma'am. एक टर्म है जेनेटिक डिसऑर्डर. इज दैट क्लियर? ये भी डिजीज है, और व्हाई डू वी फॉल में इसको भी मेंशन कर सकते हो दैट व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. तो जेनेटिक डिसऑर्डर इज ओनली हैपेंस ड्यू टू दिस कंडीशंस ऑफ क्रोमोसोम during meiosis 1, during crossing over. So if this suppose chromosome number is 46, if it happens 47 or if it happens 45, तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा ना. Is that clear? Yes, ma'am. तो डिसऑर्डर means deviation from normalcy. Normalcy is what? 46. If it becomes 47, this is the disorder. If 45 or 44, this will be also a case of disorder. तो ऐसे क्रोमोसोम नंबर के हैपनिंग से, प्लेसिंग से द डिजीज इज कॉज्ड. और वैसे डिजीज को, वैसे एबनॉर्मेलिटी को, एबनॉर्मल केसेस को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर.
जैसे देखो ये 47 है. डू यू नो व्हाट हैपेंस? इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम. यू ऑल हैव सीन द चिंकीज, मंगोलियन रेस, देखे हो? तो इफ यू आर नॉट very particular to recognize that person, at first hand you will be getting confused. होता है ना, almost similar चेहरे होते हैं, ठीक है? तो these are only due to this Down syndrome, 2s+1, ठीक है? ट्राइजोमी कहते हैं वो. अभी you are not concerned with that term, only you know कि this is the disorder of the chromosomal number, so it causes some abnormality in form of disease. तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है? if 44 or 45 happens तो Turner's disease. if 44 or 45 chromosome number becomes, so this is also a case of abnormality. So this abnormality or this abnormal number of chromosome creates one genetic disorder, that is Turner's disease. इसमें क्या होता है? Females usually infertile, sterile, they are in sterile, they cannot have the capability to conceive. तो ये सब प्रॉब्लम क्या है? दैट इज डिसऑर्डर्स, प्लेसिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल चेंजेस, दैट इज डिसऑर्डर. एम आई ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So Yes, ma'am. I think you all have got the concept, rough concept of the chromosome, why these types happens, and what happens if this abnormality occurs, and what happens with the 46 chromosome in human being, because it numbers differs from species to species. ठीक है? तो this are the things happen when abnormality in the structural pattern. ठीक है? Now come back to the cell division. तो अभी हमने क्या देखा कि how the chromosome cell division is all. You can write, it is only the behavioral changes of the chromosome during different stages. What you will say? If the question is asked, what do you mean by cell division? क्या होता है? क्यों होता है? Your answer will be what? It is nothing. Only we watch the behavioral changes of the chromosome in different stages of the somatic division as well as division of the germ cell. ठीक है? अब देखो. Ma'am. हाँ, ask. Ma'am, why different number of chromosomes present in different organisms? Okay. It is by the structural fault, you can say. ठीक है? In human being, it was all along observed कि chromosome का number it will only 46. But what I told just now, genetic disorder, वो भी तो human being है. Chinkies, they are also human being, but due to this abnormality of the chromosome during meiosis 1 in one stage, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, उस स्टेज का नाम है पैकेटीन. पैकेटीन स्टेज you will study later on. Packaging is the stage of meiosis 1 where overlapping of the arms, chromosome arms, they get overlapped. ठीक है? और वो अगर if you wish तो I will say also कि ये crossing over क्या होता है. ठीक है? तो it is differing from species to species only due to the meiosis 1 that is happening in the reproductive cell. अब देखोगे कि ड्रोसोफिला फ्लाई है
वहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 6. तो दिस इज द प्रॉब्लम happening due to the structural pattern of the chromosome in different stages. समझ में आया? जैसे Yes, ma'am. just see if you have any confusion. Just see. Meiosis 1, it is quite long process in cell division process. ठीक है? और उसमें एक स्टेज होता है, पैकेटीन, जाइगोटीन, डेप्लोटीन, ये स्टेज होता है. तो एक स्टेज है, दैट नेम इज पैकेटिंग स्टेज. वहाँ क्या होता है? जस्ट सी इफ यू वांट टू नो. जस्ट सी. ये स्ट्रक्चर दिखा. दिस इज क्रॉसिंग ओवर. ठीक है? अब क्रॉसिंग ओवर के पहले कहोगे कि ये 2 आर्म्स कैसे आ जाता है. ठीक है? तो होता क्या है, इसके पहले अर्लियर स्टेज में, पैकेटिंग स्टेज, उसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ये होमोलोगस पेयरिंग होती है. होमोलोगस मीन सेम जेनेटिक मटेरियल. ये दोनों पेयर करते हैं और फिर ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है ऑफ द, नॉट द सेंट्रोमियर, ओनली ये जो क्रोमेटिड है, आर्म्स है, उसका लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है. तो क्या होगा, ये सेंट्रोमियर अनडिवाइडेड होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग है. ऐसा होगा स्ट्रक्चर. विल द स्ट्रक्चर, यू आर गेटिंग एश्योर्ड? Yes, ma'am. तो ये पहले होमोलोगस पेयरिंग होती है, फिर लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है. नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको कहते हैं बाइवेलेंट. ठीक है? और बाइवेलेंट, ये 2 क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, 2 बाइवेलेंट है. अब देखो ये दोनों का टर्म क्या होगा आपस में. नाउ यू टेल मी. दे आर इन बिटवीन सिस्टर क्रोमोसोम. सिस्टर क्यों सिस्टर कहलाते हैं? बिकॉज ओरिजिनेशन फ्रॉम द सेम सेंट्रोमियर. इज इट ऑल क्लियर? अब देखो Yes, ma'am. ये स्ट्रक्चर है, ये सेल डिवीजन है. यू डोंट हैव टू रीड इन वेरी मच डिटेल. आई नो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइट नॉट बी गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग. समझ में आ रहा है? टेल मी यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. Yes, क्लियर ma'am. है? वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड. देखो जैसे सिंपली देखो, ये क्रोमोसोम है, 2 आर्म्स है. ठीक है? होमोलोगस पेयरिंग होता है, मतलब होमोलोगस हैविंग द सेम जेनेटिक मटेरियल, दे कम टू स्टैंड एट 1. ठीक है? अब ये 2 क्रोमोसोम है, इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर होमोलोगस पेयरिंग, longitudinal splitting. But centromere remains undivided. इसमें नहीं होता है splitting, only chromatid में ऐसे splitting हुआ. तो ऐसा structure बनेगा. It becomes 2, it becomes 2, this one also 2, this one होगा. This type of structure. Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. अब देखो ये दोनों का टर्म आपस में रिलेशन क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स. इज दैट क्लियर? बिकॉज ओरिजिनेशन इज द सेम सेंट्रोमियर. ठीक है? तो दे आर इन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एंड व्हाट विल दिस रिलेशन, टेल मी. दे आर इन बिटवीन, टेल मी क्विकली. दे आर इन बिटवीन what relationship? Tell me quickly. Don't waste time. Anyone?
they are also sister chromatids because origination from the same centromere. यहाँ भी वही हाल होगा. They are in between what? What will be the relationship? Sister Sister chromatid. chromatid. Very good. और ये क्या होगा? ये भी sister chromatid होगा. ये समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो, इधर देखो बेटा. If I ask you what will be the relation between this one and this one, ये दोनों क्या होगा आपस में? Are they sister chromatids? Homologous. Are they No, sister? ma'am. Okay. No, ma'am. तो इनको No, पता है? ma'am. हाँ, very good. तो do you know इन दोनों के आपस के रिलेशन को हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. Is it all clear? Tell me yes or no. Yes, ma'am. It's very interesting. If you concentrate, so it will be very interesting what you see here. ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए. यहाँ भी सिस्टर क्रोमेटिड्स का ही रिलेशन है. Here the same, here the same, but what will be the relationship terms in between? They are non-sister chromatids. They are also non-sister chromatids. Non-sister हमने क्यों कहा? Why it is told? Because both are originating from two different centromere, है ना? इसका centromere अलग है, इसका अलग है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? नॉन सिस्टर. ठीक है? तो यू विल राइट इन योर कॉपी हु इज इंटरेस्टेड टू नो कि क्रॉसिंग ओवर is always and always taking place only in non-sister chromatids, never in sister chromatids. समझ में आया? Have you written? Crossing over. Ma'am, please repeat. Crossing over is always taking place in between non-sister chromatids, never in between sister chromatids. समझ में आया? Am I clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अगर पूछोगे, you can ask कि why you have told कि only in non-sister chromatids, why not happening in between sister chromatids? चूंकि ये दोनों तो काफी पास हैं, दोनों आर्म, तो they can also intertwine. Why going for the other? तो what will be the answer? They are homologous in nature. Because ठीक है? Is it all clear? They are homologous in nature, having the same genetic material. तो what will be the use? और तुम लोगों को पता होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स में है, दैट इज वेरिएशन. फ्यूजन क्रिएट्स वेरिएशन. तो यहाँ क्या है कि इट कैन नॉट हैपन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स. क्यों? बिकॉज जेनेटिक मटेरियल्स आर सेम, सो इट विल नेवर क्रिएट एनी वेरिएशन. होगा? नो होगा. बट if they are overlapping, crossing over each other, for what purpose? क्या है? Purpose is only one, to exchange the genetic material. ठीक है? और जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए देखो क्या होता है. यहाँ जस्ट सी दिस डायग्राम. इसमें और इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, इसमें और इसमें होगा. अच्छे से समझना. ठीक है? तो क्रॉसिंग ओवर के पहले क्या होगा कि दे विल टच एट सम पॉइंट, मे बी एनी पॉइंट ऑफ द लेंथ. ठीक है? दे विल टच मीन्स दैट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स
ठीक है. नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स first they will touch the point upper and lower also. Am I clear? And point of touch को do you know what is told? Chiasma. The name is chiasma. तो ये क्या हुआ? They first touch at any point whatever the length of the chromatid will be, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ कैजमा. इसीलिए इसको कहते हैं कैजमेटा फॉर्मेशन. एंड वेयर जस्ट सी दे आर टचिंग दिस पॉइंट, तो ये क्या हो गया हमारा फिंगर कैजमा. एंड एट दैट पॉइंट दे विल इंटरट्विन. ये देखो ओवरलैपिंग. ठीक है, ओवरलैपिंग इन बोथ साइड. और जैसे ओवरलैप करता है देयर विल बी exchange of genetic material, and purpose is also that they only overlapped by making one point of touch, that is chiasma formation. The exchange of genetic material is now finished. समझ में आया? अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारा किसी के लाइफ में. दिस पैकेटिन स्टेज इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज द स्टेज क्रिएट्स वेरिएशन इन ऑल द यूनिवर्स. समझ में आया? और देखो ये पॉइंट ऑफ टच genetic material has been exchanged. Now then what process will left? Just see, after exchange of genetic material they will try to separate. Now purpose is solved. जैसे हमने बताया था ना कि ये सेंट्रियोल का काम क्या है. They will come out with the formation of a spindle fiber and they will bind the chromosome. As soon as they are taking the chromosome back north as well as south pole, their job, their function is all finished. अब यहाँ क्या है, ये पॉइंट ऑफ टच था, देख रहे हो. दे हैव एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल आफ्टर फॉर्मिंग कैजमा. देन जस्ट सी दिस टाइप ऑफ, ये देखो ये क्या है, जस्ट सी वेरी क्लियरली. ऐसा दिख रहा है. ये क्या है? Yes, ma'am. ये डार्कन एरिया दैट इज एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल. दिस इज व्हाट, बिकॉज अभी जस्ट तुम लोगों ने देखा कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर था, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड आफ्टर गेटिंग एक्सचेंज दे ट्राई टू सेपरेट. और इसी पॉइंट को जहाँ कैजमा का फॉर्मेशन हुआ था they will separate, they will like to separate from this point only. अब इस पॉइंट को क्या हमने कहा, जिस पॉइंट से they want to separate, they get separated from each other, इसको कहते हैं point of terminalization. ठीक है? Then they have separated. Here you are seeing and I have shown in the exchange genetic material. ये क्या शो कर रहा है? एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, डार्कन स्ट्रक्चर. ठीक है? अब देखो तुम पूछ सकते हो, बट क्वेश्चन हैज नॉट कम इन योर माइंड, कि ये तो आपस में नॉन सिस्टर थे. अभी आपने कहा कि ऑलवेज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो ये भी तो आपस में नॉन सिस्टर है. दिख रहा है दिस वन. Is that clear? Yes, ma'am. So why not they are having this crossing over? इनमें क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं हुआ? पूछ सकते हो कि अभी आपने कहा कि क्रॉसिंग ओवर ओनली पॉसिबल इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नेवर इन बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो इन दोनों में तो क्रॉसिंग ओवर हुआ.
why not they have crossed? They are also non-sister chromatids. They are in nature of having different structure, genetic material. Why not? The answer will be what? Do you know? Okay? The rate of crossing over, the frequency of crossing over also depends upon the distance of chromatid from each other. ये दोनों quite distant है ना? So they cannot go for crossing. Am I clear? Am I clear? Yes, ma'am. Okay. So अब देखो, just very interesting, just you see. ये क्या हुआ? ये यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इसको इट विल क्रिएट वेरिएशन. समझ में आया? बट व्हाट अबाउट दिस सेगमेंट? ये तो नॉन क्रॉस्ड ओवर है, नो क्रॉसिंग ओवर हैज टेकन प्लेस, तो दे विल इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन एज यूजुअल. ठीक है? तो ये क्या होगा? नॉन क्रॉस्ड ओवर. They will not create any variation. They will be transmitted to the next generation as usual. But created is which? This one. Crossed over chromatids. They will only create variation. Am I all clear? Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's very important, at least for the higher class, if you want to keep this subject for your career. तो this is very very interesting cell division. और 9th में भी तुम लोगों को एक very small short introductory पढ़ना है. ठीक है? तो this is, I think, it is not completed yet. It is a quite long process to take place. Is that clear? So cell division is what? How you will define? It is only under this process we only observe the behavioral attitude of chromosome in different stages. ठीक है? Behavior attitude of chromosome in different stages of the cell cycle. ठीक है? In different stages of the cell cycle. If you want to write, you can write it also. ठीक है? Yes, ma'am. Now any query beta? Time is running fast, so if any query you have, then ask me. Otherwise we will be meeting in the next class, certainly on Friday and Saturday in your sections. ठीक है? Ma'am, हाँ, tell me. ma'am, the point, ma'am, what is the name of that point from where they separate? Chasma. लिख लो बेटा. Chasma. No, ma'am, from where they separate. Oh, point of terminalization. Point of terminalization. Exactly from that point they will separate, but separate when? When they have crossed, having the segment with exchange genetic material. Is it all clear? So this Yes, is ma'am, the, please. हाँ, Cell division. हाँ, Ma'am, what is cell division? Please repeat it. what multi-cell division means? No, ma'am, cell What is division. cell division? Okay, just see. Here, cell division is what? First, we observe the behavioral changes of the chromosome in different stages of cell cycle. Have you noted down? Have you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So
यहाँ पे हमने क्या देखा? Hello? Hello? So see here that behavioral changes of the chromosome in different stages of cell cycle. So here you are seeing that chromosome you have seen just present outside the nuclear membrane. तो वो क्या था? It was all inactive. ठीक है? That was completely inactive and Excuse me, ma'am. हाँ just see मैम हाँ जो पॉइंट ऑफ यूनिजन होता है क्रोमैटिड सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का, हाँ। उसको कैज़मा कहते हैं। हाँ तो कैसे? मैम सेपरेशन भी तो उसी पॉइंट से होगा ना। हाँ लेकिन उस प्रोसेस को नॉट दैट कि वो सेपरेशन उस पॉइंट पे भी होता है, बट इट मे ऑल्सो अकर फ्रॉम अदर पॉइंट ऑल्सो. तो on the Okay. basis of getting separated, they are told as, the point is told as point of terminalization. ठीक है? या termination point भी कह सकते हो. Am I clear? ओके मैम। Okay. तो यहाँ मैम आप पे जब एक्सप्लेन कर रही थी हाँ बोलो. मैम आप जब एक्सप्लेन कर रही थी तो आप कुछ बोली थी 6 क्रोमोसोम्स, मैम वो हम नहीं सुन पाए थे। Okay. So in short I am telling you because within minute the time will be over. I have told 46 chromosome number we have, and the number of chromosome varies from species to species. ठीक है? तो जैसे Yes, ma'am. 46 है, one term I have told genetic disorder. ठीक है? Genetic disorder is only happening due to abnormality in the chromosomal number. If I had told 46 है हम लोगों में, if it becomes 47 or if it becomes 45, 44, ठीक है? So that creates what? It is abnormality. So this abnormality creates some form of disease, some form of disorder. जैसे 47 में हमने कहा था इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम, that is denoted by trisomy 2n+1. ठीक है? And Down syndrome usually happens, it is the case in Mongolians, Chinkies में देखते हो, when you see at the first sight you will be not able to separate the features at first hand. They are looking just because the external feature, morphological feature the same. So it is the Down syndrome. When 44, 45 is happening, ये भी एक disorder है. तो if happening in female usually इसमें होता है, उसको कहते हैं टर्नर्स डिजीज. इस स्टेज में क्या होता है? इस केस में females become sterile, they are not able to conceive. ठीक है? तो this is the thing happening in case of genetic disorders. Now any problem? Yes, ma'am.
So मैम आप whatever बताई थी um, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, तो मैम उसका वो क्यों होता है वो टाइप्स, वो भी आप शायद बताई थी मैम, तो उस वक्त ये हमने कहा था नहीं कि सुन पाए थे। why these are the different types. तो types depends only whatever the chromosome is behaving in meiosis 1 of packaging stage. ये हमने बताया ना, तो it is Yes, only because of that. So you do one thing, time is already over, then it will be closed. So you collect different questions regarding this topic or whatever you like, ठीक है? And in next class you just discuss one by one. Is that clear? Till then beta, yes ma'am. have a good day and study hard and select number of questions to ask in the next class. ठीक है? Okay ma'am. Okay ma'am. Till then, bye.